used to appoint these Peshwas. But the situations will change after 1713. Now, who is more powerful? Peshwa is more powerful. Peshwa office is more hereditary, right? Okay, and that's why from 1713 onwards, the age is called age of Peshwa dominion. ये बात आपको समझ गई? Okay, समझ में आई? Age of Peshwa dominion. Now I am again coming to the concepts. Okay, what we need to learn about these Peshwas. What is important? So this is Balaji Vishwanath from 1713 to 1720. Okay. So we need to know a few important achievements of Balaji Vishwanath. कि Balaji Vishwanath के a few important achievements of Balaji Vishwanath. So what I told you that from 1713 onwards, what started right this point, that age of Peshwa domination or dominion and control will start. Age of Peshwa dominion and control will start from this period onwards, 1713 onwards, right? Okay, so he can also be called as the second founder of the Maratha Empire. Second founder of the Maratha Empire. First founder was Shivaji. Okay, so Marathas had significant achievements during this period, so he is also known as second founder of Maratha Empire. Second founder of Maratha Empire. Now, what is the meaning of this? So he is an able and efficient Peshwa. So what he will do? Okay, Maratha, the areas under Maratha dominion and control will be extended. It means political control and boundaries will be extended. It means what will happen? Expansion of Maratha Empire will take place. Now Marathas will conquer comparatively larger areas. That's the expansion of Maratha Empire will take place under Balaji Vishwanath. अच्छा, एक और स्टोरी यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहा ना? क्लास बहुत स्लो तो नहीं है? ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम जस्ट टीचिंग विद द पर्पस कि बुक नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है? दिस इज माई ऑब्जेक्टिव व्हेन आई विल टीच ऑप्शनल ऑल्सो. ओके, आई हैव ऑलरेडी डन इट प्रीवियसली. आई वाज टीचिंग जयपुर, तो ऐसा मैंने किया था. बिकॉज पीपल डोंट, उन लोगों को लगता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टीचर? ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो यू नीड टू रीड ओनली PYQs मेरी क्लास में, ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपके बदले मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट? ओके, केवल PYQs प्रैक्टिस करोगे क्लास में. अब एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. व्हेन औरंगजेब डाइड इन 1707, तो मुगल एम्पायर में कौन सा रूलर था जिसने दक्कन और साउथ इंडिया तक अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था? दिस वाज औरंगजेब. औरंगजेब था ना, ठीक है? Deccan campaigns, military campaigns. Now, when Aurangzeb will die, what will happen? These states of South will again start declaring themselves independent. It means Mughal power and control in Deccan and South India will further increase or decrease? Decrease. देखो कितनी आसान सी बात है, ठीक है? कि after the death of Aurangzeb, what we see is that Mughal power and control in Deccan region will decrease. वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है? बिकॉज आगे जो रूलर्स हैं, द रूलर्स आर ऑल्सो व्हाट? वीक एंड इनएफिशिएंट. वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर्स भी, दे आर द लेटर मुगल्स. तो यहाँ पे दक्कन में मुगल पावर का कंट्रोल वीक होगा. एंड व्हेन योर कंट्रोल विल बी वीकर, डू यू थिंक दैट द लोकल रूलर्स ऑफ दक्कन विल पे यू द ट्रिब्यूट और द रेवेन्यूज? नो, they will not send you the part of the revenue regularly. They will stop paying it. Revolts and rebellions against the Mughal emperor will increase in Deccan region. Now, after the death of Aurangzeb, what about Marathas? They will become more powerful or more weaker? Powerful. Clear? Because they continuously fought with the central Mughal authority. Now Aurangzeb had died. Aurangzeb का Deccan में interference है. वो इंटरफेरेंस कम होते ही मराठा पावर विल स्टार्ट बिकमिंग, ओके,
more powerful. मराठा पहले से ज़्यादा powerful होंगे. It means now Deccan, which is the most important power, so after the death of Aurangzeb, now Marathas were the most formidable power in Deccan. Deccan में सबसे ज़्यादा powerful कौन है? Maratha, right? And Marathas will also start influencing the court politics of the Mughal emperor. ठीक है, आपको पता है कि लेटर मुगल्स के फेज में क्या होगा? कोर्ट पॉलिटिक्स, कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज विल इंक्रीज, राइट? नाउ these Marathas were also playing important role in court politics of the Mughal emperor. Court politics में भी इनका बड़ा important role है. It means they are also popular in the Mughal court. They have established good relations with the Sayyid brothers. ठीक है, 1713 to 1719 was the period when who was ruling? फर्रुख शेयर वॉज रूलिंग. याद है आपको? ध्यान रखना इस बात को. बालाजी विश्वनाथ का टाइम और फर्रुख शेयर का टाइम. फर्रुख शेयर का टाइम क्या है? 1713 टू 1719, यही टाइम पीरियड है ना. फर्रुख शेयर वॉज रूलिंग. अच्छा, व्हेन फर्रुख शेयर वॉज रूलिंग, बेसिकली हु वॉज पावरफुल? Sayyid brothers were powerful at that time, and Sayyid brothers were also called kingmakers. Now Balaji Vishwanath will also develop good relations with Sayyid brothers. सैयद ब्रदर्स के साथ बालाजी विश्वनाथ के अच्छे रिलेशन है. तो क्या वो मुगल एम्पायर से अपनी बात मनवा सकते हैं सैयद ब्रदर्स? यस. क्या मराठास अपनी बात मुगल एम्पायर से मनवा सकते हैं? यस, दे कैन इजीली डू सो. नाउ दिस इज द सेम टाइम व्हेन मुगल एम्पायर will issue a farman for Marathas. Read this, Farman of 1719. This farman is very important. Read this, Farman of 1719. फरमान ऑफ 1719. फरमान का मतलब रॉयल ऑर्डर. किसने इशू किया था? मुगल एम्परर ने. नाउ फरमान वाज इशूड. ओके, फरमान मीन्स रॉयल ऑर्डर, एंड दिस फरमान इज ऑल्सो नोन एज, राइट दिस, मैग्ना कार्टा फॉर द मराठा पावर इन इंडिया. दिस फरमान is also known as Magna Carta for Maratha power in India. This is also known as Magna Carta for Maratha power in India. This Farman is also known as Magna Carta for Maratha power in India. Now we have to understand that why it's called Magna Carta for the Maratha power in India. क्यों इसको Magna Carta कहते हैं? This we need to understand. ठीक है ना? Why we are calling it Magna Carta for the Maratha power in India? This we need to understand. क्यों इसको Magna Carta हम कह रहे हैं? Why we are calling it Magna Carta for the Maratha power? तो देखो, now just a common point that for Mughal ruler it is easy to collect revenues from Deccan with the help of Marathas. मेरी बात समझ गए? जिस एरिया में आपका दबदबा नहीं है, वहां जिसका दबदबा है उसके साथ दोस्ती कर लो. Now it is easier for the Mughal emperor to collect taxes, revenues from Deccan states with help and support of Marathas. Because 1707 onwards, Mughal power was becoming weaker in Deccan. Marathas are emerging as powerful. वो वहाँ पे powerful हो रहे हैं under the leadership of Peshwas. So this Farman will, right, give what? Right, points of this Farman of 1719. Right, what is the points of this Farman? This is very important point. Points of this Farman, we need to know that. Okay, points of this Farman. Farman में क्या कहा गया? Okay. So now in this Farman, the first point is, first right, then I will explain. Right, okay. Marathas were given rights to collect Chauth and Sardeshmukhi. Marathas were given rights to collect Chauth and Sardeshmukhi. Marathas were given rights to collect Chauth and Sardeshmukhi. Marathas were given rights to collect Chauth and Sardeshmukhi from entire Deccan region. From entire Deccan region. From entire Deccan region.
from entire Deccan region. They were given right to collect Chauth and Sardeshmukhi from entire Deccan region. अब इस बात को समझना है, डेक्कन रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते उस समय. ओके, तो देखो, हैदराबाद वॉज देयर, कर्नाटका वॉज देयर, बीजापुर वॉज देयर, बीदर वॉज देयर, बरार वेयर देयर. इट मीन्स ऑल स्टेट्स विल पे व्हाट, चौथ एंड सरदेशमुखी टू द मराठास. आपको पैसा किसे देना है, मराठास को. एंड मराठास विल डू व्हाट, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मराठास विल पे 10 lakh rupees, okay, to Mughal emperor as an annual tribute. 10 lakh rupees to the Mughal emperor as an annual tribute. Marathas will pay 10 lakh rupees to the Mughal emperor as an annual tribute. ये बिल्कुल वैसा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे और उसके बदले में कंपनी कितना पे कर रही थी, 26 लाख रुपीज. मेरी बात समझ गया. So here Marathas has got the right to collect Chauth and Sardeshmukhi. I will discuss the meaning of these two words. And Mughal, they will give Mughal emperor how much? 10 lakh rupees annually. Right, third point. अच्छा, मुगल एम्पायर का काम आसान हो गया कि नहीं, वन टाइम पेमेंट मिल गया उसको 10 लाख रुपीज, वैसे भी वसूल नहीं पाता वो, लेटर मुगल्स का दौर है. राइट, दिस इज द पॉइंट. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मराठास विल हेल्प मुगल एम्पायर. Marathas will also help Mughal emperor in the suppression of revolts and rebellions in Deccan region. Marathas will also help Mughal emperor in the suppression of revolts and rebellion in the Deccan region. Marathas will also help Mughal emperor in the support of revolts and rebellion in Deccan region. They will also help in the support of revolts and rebellions in the Deccan region. कितना आसान है, right? Right, next point. Marathas will also maintain a reserve army of 15,000 troops. Marathas will also maintain a reserve army of 15,000 troops to support Mughal emperor. Marathas will also maintain a reserve army of 15,000 troops to support Mughal emperor in Deccan region. They will also maintain a reserve army of 15,000 troops to support Mughal emperor in the Deccan region. इतनी बात आपको समझ में आई कि obviously this will be a help and support for the Mughal emperor in the Deccan region. इसका मतलब Deccan region से क्या होगा, Marathas can collect Chauth and Sardeshmukhi from those states which were part of Mughal Empire in the Deccan. They will collect this, and in lieu of this, they will give 10 lakh rupees annually to the Mughal Emperor as a tribute. And third, what they will do? They will also help Mughal Emperor in suppression of revolts and rebellions in Deccan region. And fourth, what they will do? So they will also maintain a reserve army of 15,000 troops, okay, for the support of Mughal Emperor in case the Mughal Emperor needs some help. Okay. Now, why it is called Magna Carta? This is to be understood. Okay. Now, if Mughal Emperor has given Marathas the right to collect taxes from this region, it means the Maratha power has been validated by the Mughal Emperor in the context of Deccan. It's the same like East India Company, Diwani rights, 1765. If Mughal Emperor had signed a document and has authorized East India Company to collect land revenue from Bengal, Bihar and Odisha, so what has happened? The right of East India Company as an administrative body has been validated. उसको वैलिडेशन मिल गया है. ये सबसे बड़ी बात थी कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वही चीज तो यहाँ भी है. That if Mughal Emperor is authorizing Maratha, it means Maratha power has been validated. Maratha power has been validated. Okay.
their authority has been validated. Their authority has been validated. Now, undoubtedly, now what we see, undoubtedly, Marathas are the most powerful forces in the south or Deccan region. They are the most powerful forces in the south or the Deccan region. There is no any doubt in this. There is no any doubt in this. Got it? So this is of immense importance. It validated the Maratha power and presence in the Deccan. Okay, it validated the Maratha power and presence. Now I will discuss the meaning of these two terms, Chauth and Sardeshmukhi. Okay, what is the meaning of this? Write this word, Chauth. Chauth, have you heard this word? Ek chauthai, 1/4. So Chauth means the same. Chauth means 1/4. Ek chauthai, 1/4 is Chauth. 1/4 is Chauth. For example, okay, let's take an example. We say that 1/4 is the Chauth. Let's take an example. The states of Deccan will pay Chauth. For example, Bijapur, Bidar, Hyderabad, all are the states in Deccan. ऐसे बहुत सारे states हैं. Bijapur है, there is Bidar, there is Hyderabad. There are so many states. Suppose Bijapur revenue collection is 200 rupees. Now Bijapur will pay how much to the Marathas? 200 है, तो कितना पे करेगा मराठा को? 1/4. That means 50 rupees. Suppose Bidar revenue, annual revenue is 100 rupees. So it will pay how much to the Marathas? 25 rupees. Suppose Hyderabad collection is 400 rupees. मान लेते हैं. So Hyderabad will pay how much? 100 rupees. ठीक है? This they will have to pay to Marathas. मराठास को ये टास्क क्यों दिया गया? क्योंकि मुगल एम्पायर को ये दे नहीं रहे थे पैसा रेगुलरली. मराठा पास में यहाँ आके वसूल लेंगे, किराया वसूलने ऑन टाइम आ जाएंगे, भाई लौट दे दो अब पैसा, राइट? तो मराठास कैन कलेक्ट दीज टैक्सेस फोर्सफुली. ठीक है, उनके साथ आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, दे आर पावरफुल. ठीक है, तो मराठास कैन कलेक्ट द टैक्सेस 1/4. ओके, और क्या ये पूरा का पूरा 1/4 मुगल एम्पायर को दे रहे हैं? नहीं, 10 लाख रुपीज एनुअली. तो बताओ, आपके पास रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो आपकी मिलिट्री मजबूत होगी. मिलिट्री मजबूत होगी तो आप और ज्यादा पावरफुल बनोगे. इट्स ऑल व्हाट अबाउट रेवेन्यूज. यू विल गेट मोर रेवेन्यू, maintain a more powerful army, and in this way will emerge as powerful. Now what is Sardeshmukhi? Now this is additional tax. Sardeshmukhi, read this, Sardeshmukhi, Sardeshmukhi. This is additional tax. ये सेस की तरह है. This is additional tax. It is like cess. It is like cess. And there are two different meanings of this Sardeshmukhi, and I will discuss both these two meanings. Two different meanings of Sardeshmukhi. And what is the meaning? देखो क्या है. For example, Sardeshmukh. Shivaji was known as Sardeshmukh. Sardeshmukh means Sardar, your leader, right? So paying Sardeshmukhi means you are acknowledging Shivaji as your Sardeshmukh also. सरदेशमुख देने का मतलब ही है कि आप शिवाजी के प्रति क्या कर रहे हो? अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे हो, राइट? एक्नॉलेजिंग शिवाजी एज सरदेशमुख, यू आर पेइंग व्हाट? सरदेशमुखी. ओके, ये मतलब आपको समझ में आया? सरदेशमुख मीन्स सरदार. हु इज सरदार? शिवाजी. शिवाजी. So paying Sardeshmukhi is like a kind of acknowledgement. Paying Sardeshmukhi was like a kind of acknowledgement that you are acknowledging Shivaji as Sardeshmukh. Okay, you are acknowledging Shivaji as Sardeshmukh. Now these states are paying chauth. For example, Bijapur is paying chauth. How much chauth it is paying? 50 rupees. Now Sardeshmukh here means Sardeshmukh 1/10. चौथ में कितना है? 1/4. सरदेशमुख में हाउ मच यू विल पे? 1/10. राइट दिस, 1/10. 1/10. In Sardeshmukhi tax you will pay 1/10. 1/10 of what? So 1/10 of chauth. Got it? Now here Sardeshmukh, Bijapur is paying how much chauth? 50 rupees.
So what is the 1/10 of this 50 rupees? That is 5 rupees. So chauth is 50 rupees and Sardeshmukhi is 5 rupees. So the total revenue which Bijapur will pay is equal to how much rupees? 55 rupees. कितना आसान है. Now Bidar will pay how much? 25 rupees as chauth and 2.5 rupees. That is 10% of chauth as Sardeshmukhi. So this will become 27.5 rupees. In the same way, Hyderabad is paying 100 rupees as chauth. So 1/10 of 100 rupees is 10 rupees. It means 110 rupees it will pay. So this is the total revenue they will pay. This is just an example. So Sardeshmukhi is 1/10. Okay. So those states who are paying chauth, they will pay Sardeshmukhi. So in that case, it will be 1/10 of the chauth. But there were many territories who were paying Sardeshmukhi only, and they were acknowledging Shivaji as their Sardeshmukh. So they will pay how much? 1/10 in that case. So there were two type of territories ना. ठीक है. तो देखो, those territories which are गिविंग एक्नॉलेजमेंट कि भाई हम शिवाजी की अधीनता स्वीकार करते हैं. मेरी बात समझ गया ना. मराठास विल से दैट वी आर प्रोमोटिंग हिंदू आइडल्स, so we need money, economic resources for that, and you will have to pay that. We are fighting for the pride of our country, for the pride of our culture, our pride of our religion. So many territories were acknowledging Shivaji as their Sardeshmukh, and in that case they were paying 1/10. तो यहाँ पे चौथ नहीं था, बहुत सारे टेरिटरीज ऐसे भी थे जहाँ पे एज अ सरदेशमुख दे विल पेइंग 1/10 ऑफ द टोटल रेवेन्यू. मेनी टेरिटरीज वेर पेइंग व्हाट? चौथ, एंड along with chauth they were also paying sardeshmukhi. So they were the sources of revenue. But Marathas did what? They frequently raided states in the north तक हमला कर आते थे. They frequently raided the states in the South India, Deccan region. Okay. And due to this frequent raid, the local powers were not happy with the Marathas. मेरी बात समझ गए? And this is what? Lack of diplomatic outlook of Marathas. वो diplomacy नहीं थी. They were lacking what? Diplomacy. They were frequently raiding. So when they will need help and support, no any regional power will come in their help and support. For example, in last class I discussed Anglo-Mysore War. तो पहले वॉर में क्या हुआ था? Hyder Ali was successful in getting the support of Nizam and Maratha. But in the later wars, what happened? Nizam and Maratha helped and supported whom? East India Company. So Marathas were lacking the diplomatic outlook. Okay, they were lacking this diplomatic outlook. They will realize it, but it will be too late. Okay, so this is what Chauth and Sardeshmukhi. So why it's called Magna Carta for the Maratha power? ये बात आपको समझ में आई? अब इससे एक और कॉन्सेप्ट मैं रिलेट करूंगा, देन यू विल लर्न इट बेटर. दिस फरमान डिड व्हाट? 1719 फरमान ने इस एरिया से आपको चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए वैलिडेट कर दिया. नाउ दे वर कलेक्टिंग टैक्स. who has given them rights? Mughal emperor. But gradually they will do what? Okay, they will convert themselves as the hereditary revenue chiefs or the sardars. ठीक है. एक टाइम ऐसा आएगा कि कलेक्ट करते करते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मुगल एम्परर को कोई पैसा नहीं देना है. नाउ दे आर डूइंग व्हाट? They will start collecting the taxes. They will declare these rights as their hereditary, and they will start treating these areas as their जागीर, वतन और सरंजाम. जहां से मुगल एम्परर ने बोला था कि इसे, जैसे मान लो कि मेरा एक मकान है, मैंने किसी को, जैसे आकाश को कहा कि यार किराया वसूल के लाओ, और आकाश 10 सालों तक 20 सालों तक किराया वसूलते रहे फॉर द 10 years 20 years, एंड ग्रेजुअली आकाश क्या कहेंगे? मैं इस मकान का मालिक हूँ. ऐसा होता है ना? ठीक है. ठीक है. कब्जा जिसको बोलते हैं, खूब कब्जा. अपने यूपी बिहार में तो खूब कब्जा होता है. ठीक है. वकील को लोग किराए पे घर नहीं देते हमारे इलाहाबाद में. ठीक है, क्योंकि वो कब्जा कर लेगा. वकीलों से बहुत डरते हैं. ठीक है. किराए पे नहीं पूछ, वकील हो, नहीं हम नहीं दे रहे तुमको. ठीक है. तो वो द सेम विल हैपन हियर. ओके, Marathas has got these rights from Mughals, but gradually
They will establish themselves as the hereditary chiefs in this entire region. Okay, and they will declare these areas as their वतन. वतन मीन्स जागीर. जैसे मुगल पीरियड में जिस चीज को आप जागीर कह रहे हो, मराठा में उसे ही हम क्या कहेंगे, वतन और सरंजाम. ओके, so write this point that gradually gradually Maratha chiefs gradually Maratha chiefs, okay, will declare themselves as the hereditary chiefs or sardars of these areas, hereditary chiefs or sardars of these areas, and they will declare these areas as their watan or saranjam. They will declare these areas as their watan or saranjam. It has the same meaning as zagirs. ठीक है? Gradually, they will declare these areas as their watan, saranjam or jagir. ठीक है? They will declare these areas as their watan, saranjam और जागीर. ठीक है? अब मराठास के पास क्या है, लार्जर एरिया टू कंट्रोल, लार्जर एरिया टू रूल. अब बताओ, if you have larger area to control and rule, so in order to maintain administration you will have to develop a system of administration. आपको क्या करना होगा, एक system of administration भी develop करना होगा. If you are controlling larger areas and territories, so you need to maintain, you need to develop what, a system of administration. Clear? And as a result of this, when Marathas started controlling larger area or territory, so in order to administer that, they developed a model. This is that, and that model is called Maratha Confederate system. Write this. That model is called Maratha Confederate system. That model is called Maratha Confederate system or Maratha Confederacy. It was a form of loose confederation of Maratha chiefs. It was a form of loose confederation of Maratha chiefs. इसका मतलब क्या है कि now this entire Maratha territory or area will be divided and distributed among powerful Maratha chiefs. ठीक है? This is the concept. It means that the entire Maratha territory or area, entire Maratha territory or area will be divided and distributed. Entire Maratha territory or area will be divided and distributed among powerful Maratha chiefs. That will be divided and distributed among powerful Maratha chiefs. ये सारा area will be divided and distributed among powerful Maratha chiefs. ठीक है? और ये मराठा chiefs कौन कौन से हैं? They are, these Maratha chiefs are, okay, write the names. They are Sindhia, Bhosle, Holkar, Gaikwad. ठीक है? And their chief was Peshwa. Sindhia, Bhosle, Holkar and Gaikwad. These were the four powerful units of this confederation. These were the four powerful units of this confederation. Sindhia, Bhosle, Holkar and Gaikwad. They were the four powerful units of this confederation. Now Sindhyas were controlling which area? बताओ. सिंधिया कौन सा एरिया कंट्रोल करेंगे? विच एरिया? एग्जैक्टली, ग्वालियर. राइट दिस, ग्वालियर. सिंधियाज विल कंट्रोल विच एरिया? तो ग्वालियर और इसके आसपास की टेरिटरीज किस पे के पास आ गई? सिंधिया. भोसले कौन सा एरिया होगा बताओ? यस, महाराष्ट्र. भोसले महाराष्ट्र. एग्जैक्टली. ओके. होलकर इंदौर. नागपुर भी होगा इसमें. ठीक है.
Bhosle Indore, Gaikwad, okay, Gujarat, Baroda, Baroda region, ठीक है. And Peshwa, the center of Peshwa's power is what? Pune, Pune, Pune से Peshwa will rule. So this is the center of Peshwa's power, Pune. इसका मतलब all these areas were under Maratha control and dominion, ठीक है. And this all became possible due to which फरमान? 1719. कहानी तो वहीं से जुड़ जाती है ना कि हाउ मुगल एम्पायर वैलिडेटेड योर पावर, और आपने क्या किया, रेवेन्यू कलेक्ट करते करते अपने आप को पूरे एरिया का हेरिडिटरी चीफ बना दिया. सो एंटायर स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. That's why this is called Magna Carta for the Maratha power in India. And this all happened during which Peshwa? This all happened during Peshwa Balaji Vishwanath. So is it proper to say him that he was the second Maratha founder? Yes, ठीक है, proper कह सकते हैं. Now the next Peshwa, right? Next Peshwa after Balaji Vishwanath, the next Peshwa was Peshwa Balaji Peshwa Baji Rao first. Sorry, Baji Rao first. Peshwa Baji Rao first. And the time period is 1720 to 1740. Baji Rao first. 1720 to 1740. Okay. And he was an expert military chief. Okay. He was also very capable. Okay. Very powerful. And he fought many wars. For what? For the expansion of Maratha territories. And that's why he is also known as Fighting Peshwa. He fought many wars for the expansion of Maratha territory. And that's why he is also known as Fighting Peshwa. And he did what? He promoted Hindu ideals. Okay? Hindu ideals को promote किया. He promoted Hindu ideals as well as he protected Hindu ideals. Promoted and protected both. He promoted and protected both. So he was the most popular also. He was the most popular also. सबसे पॉपुलर भी बाजीराव फर्स्ट. तो फिल्म भी बनेगी तो हीरो में कौन बनेगा बताओ? बाजीराव फर्स्ट. ठीक है, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो. So this is what the next Peshwa. Okay, it means he did what? By his power, by his valor, by his military conquest, he provided strong foundation to the Maratha Empire. Balaji Vishwanath ने क्या किया? He laid the second foundation and he made the Maratha Empire more powerful. More powerful. He gave strong foundations to the Maratha power. He made Marathas more powerful. He gave a strong foundations to the Maratha power. Strong foundations to the Maratha power. Okay. Now the next Peshwa was Balaji Bajirao. Third Peshwa. Third Peshwa was Balaji Bajirao, and the time period is 1740 to 1761. This is Balaji Bajirao. 1740 to 1761. Okay. Now let's look at this map again so that we can understand it. Look at some previous slides on the maps and you will find that these are the areas which were controlled by Shivaji. So Shivaji was controlling what? Very small areas or territories, particularly some of the areas of Western Deccan and some sporadic areas. Now look at this. This entire area is what? This entire area. Look at this entire area. This is Gaikwad. Okay. This is what? Maratha Confederacy. What is written here? Sindhya. What is written here? Bhosle. What is written here? Peshwa. All these areas were controlled by whom? Marathas. ठीक है. Marathas invaded Bengal, Bihar and Odisha also. ठीक है. North states also. But when they will enter into Punjab, there was an invader, Ahmad Shah Abdali, Afghan invader. So 1748 में he invaded India. Okay. He will invade, collect the money
and will return from India. वापस चला जाएगा. And when he invaded, he controlled some political territories in India and he appointed a successor. Basically, it was some part of the Punjab. And he appointed his successor to look after the administration in that area. अपने एक आदमी को अपॉइंट कर दिया कि रूल करो तुम, मैं चला, मैंने पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए इसलिए आया हुआ था. बट व्हाट विल हैपन, मराठा पहुंच जाएंगे पंजाब. They will reach Punjab and they will do what? Okay, they will create troubles for the representative of Ahmad Shah Abdali. जाके उसको परेशान करेंगे. ठीक है, कि तुम्हारा बॉस बहुत पैसे लेके गया, अब हम तुमसे वसूलेंगे. Now what will happen? Ahmad Shah Abdali will return. And Ahmad Shah Abdali will return with a commitment. And what is his commitment? That I will uproot Maratha power from India. वो इस commitment के साथ दोबारा वापस आएगा. And when he comes back, he also takes help of the local rulers or the powers. बक्सर के वॉर में कौन था अवध का रूलर? सुजाउद्दौला. अहमद शाह अब्दाली विल टेक हेल्प ऑफ सुजाउद्दौला आल्सो. वो सुजाउद्दौला से भी हेल्प लेगा. मेरी बात समझ गया ना? So that battle is very important, that we'll discuss. Okay, but now I hope that you can easily understand that why we call Peshwas as Balaji Vishwanath as the second founder of the Maratha Empire. This is quite clear. Okay, that why Shivaji was the first founder and Balaji Vishwanath was the second founder, because what is started due to this, the Maratha power, dominion and control increase. Now the third Peshwa was Balaji Bajirao, and here two important developments are seen, and they are very important facts for prelims exam. Two important developments are seen. One important development is, दो total important development है. One is again important for prelims, Sangola agreement, right? Sangola agreement. One development here is Sangola agreement. Sangola agreement. This agreement was signed in 1750. And the second important development here is third battle of Panipat. So these two are the most important question for your prelims examination. One is Sangola agreement and the second is third battle of Panipat. These are 2 points. Sangola and third battle of Panipat. Third battle of Panipat was fought in which year? 1761. Who was the ruler at that time? Balaji Bajirao. So we need to understand both these two concepts. ठीक है, किसी भी टॉपिक से जो कोर इश्यूज होते हैं उन कोर इश्यूज को पिक करो. यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट इशू. नाउ व्हाट इज संगोला एग्रीमेंट? हाँ पूछिए बिपिन, आस्क योर क्वेश्चन. आई विल डिस्कस. ठीक है, पहले ये वाला पूरा एपिसोड समझो. वी आर ट्राइंग टू रीड rulers and the Peshwas, what happened. Then I will relate about East India Company also. वो concept भी relate करूँगा, one by one will come to that. ठीक है ना? Okay. Now, Sangola agreement. This is very clear. अभी तक क्या हो रहा था? In this system what we see previously before 1750. देखो क्या होगा यहाँ. Before 1750, this agreement was signed in 1750 ना. So just compare before 1750 and after 1750. What are the changes here? Before 1750 and after 1750. हमें इन्हीं दोनों चीज़ों को बस कंपेयर कर लेना है कि क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, तो बिफोर 1750 what we see here is that, okay, before 1750 there was a Maratha ruler and there was a Peshwa. Okay, Peshwa means prime minister. So Peshwa practically controlled all power. Practically controlled all power. All power, right? All power. Practically वो सारा का सारा power control करता था. Is it clear? Practically controlled all power. But in theory, in theory, in theory, who was the ruler or who was the ultimate head of the Maratha power? Who was the ultimate head? मुगल रूलर. यही है ना, हेड तो मुगल रूलर ही है. प्रैक्टिकली ये कंट्रोल कर रहा है, बट दिस इज नॉट लीगल. ये लीगल नहीं है. So there are two words. One is de facto and the second is de jure. ठीक है ना?
So we see here what that Peshwa is controlling all power. Basically, Peshwa is ruling, but this is not validated by law. By law, who is the ruler? Maratha ruler is the supreme head. He was the supreme head in theory. In theory, who was the supreme head? Maratha ruler. In practice, who was the supreme head? Okay, Peshwa. Now in 1750, this agreement will be signed. This is called Sangola Agreement between Maratha ruler and Peshwa, and Maratha ruler will surrender all his powers in the hands of Peshwa. मेरी बात समझ गया? This will happen. Sangola Agreement से क्या होता है? 1750. Read this. Maratha ruler will surrender. Maratha ruler or Maratha chief surrenders all his powers to Peshwa. Surrenders all his powers to Peshwas. Surrenders all his powers to Peshwas. वो अपने सारे के सारे पावर किसको ट्रांसफर कर देगा? पेशवा को. Now the new head, that's okay, real head also, that's practical head also. Who is the head? Peshwa. So from 1750 onwards, what happened? Read this. Peshwa emerged as the head of the Maratha power. Head of the Maratha power. Now Peshwa was de facto head also, and Peshwa was de jure Haldor. It means now all power concentrated in the hands of Peshwa. अब मराठा रूलर का कोई काम नहीं है. नाउ पेशवा इज द मराठा रूलर. अब ये बात समझ, यही है इसका मतलब, राइट? पेशवा इज द मराठा रूलर. All power shifted, all power comes in the hands of Peshwa. All power comes in the hands of Peshwa. Now Peshwa is the ruler also. He is the prime minister. इतनी सी बात है कि अब वही रूलर भी है और वही क्या है? प्राइम मिनिस्टर भी है. एंड द सेंटर ऑफ पावर इज व्हाट? पूना. पेशवा का सेंटर ऑफ पावर क्या हो गया? पूना. नाउ टेल मी वन थिंग. फ्रॉम 1750 onwards, in Maratha Confederacy, who is the boss of all confederate units or the chiefs? पेशवा. यानी कि सिंधिया, भोसले, होलकर और गायकवाड़, इन सबका बॉस कौन है? पेशवा. अच्छा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई ट्रीटी साइन करनी है तो मराठा रूलर के साथ साइन करेगी या पेशवा के साथ साइन करेगी? पेशवा के साथ साइन करेगी. तो 1750 के बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी ट्रीटी साइन करेगी तो वो किसके साथ साइन करेगी? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पेशवा के साथ. गॉट इट? दिस इज व्हाट? संगोला एग्रीमेंट. समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. राइट दिस, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. तो इसको स्टार मार्क लगा लो. यू मस्ट नो दिस. बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं. अगर आप उस रेफरेंस को, इवेंट को थोड़ा सा भी रिलेट कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. ठीक है ना? दैट्स द आइडिया. ठीक है. और पूरी मॉडर्न इंडिया जब फिनिश हो जाएगी, देन आई विल डिस्कस ऑल द PYQs हियर. ओके. एंड विल अपलोड ऑल द PYQs ऑन यूट्यूब. ठीक है, उसको यूट्यूब पे भी डालूंगा. और डिस्कशन सेशन में आप ज़रूर रहना. इससे क्या होगा? हाउ टू यूज़, ओके, your concepts, what you have learned in the classroom, how to just make smart guesses in the examination, this all I will discuss in detail. But उसका सेशन हम कब रखेंगे? आफ्टर दिसंबर और जनवरी. ठीक है, बिकॉज दिस विल बी 5 और 6 क्लासेस. तो पूरा का पूरा आपका थीम क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा. तब तक आप अपने नोट्स पढ़ लोगे, खुद से 1-2 बार PYQs पढ़ लोगे, तो वो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको. ठीक है ना? तो एंशिएंट मेडिवल के लिए और मॉडर्न के लिए वी विल हैव दैट काइंड ऑफ सेशन. बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर नाउ. अभी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज व्हेन यू विल रीड इट इन जनवरी एंड फरवरी ना, ओके, सो यू विल रिलेट दोज. और हिस्ट्री पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना है कि हमने PYQ सिर्फ हिस्ट्री का प्रैक्टिस किया. नहीं, वहाँ पे जो आप स्किल यूज़ कर रहे हो कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है चीज़ों को, द सेम स्किल यू विल अप्लाई ऑन द ऑल GS पेपर्स. ठीक है ना? अदर GS पेपर. तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल है. ठीक है, ऐसे नहीं सोचना. नाउ we are coming to this second episode that is very important, third battle of Panipat 1761. So let's discuss this. This is also an important question for your prelims exam. You will find PYQs related to this topic. ये मैं डिटेल में इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इन एंशिएंट मिडिवल आई डोंट टीच
this part in detail, so that's why I cover it in modern India. Now, what we see is that there was an Afghan adventurer. नादिर शाह की कहानी तो हम पढ़ ही चुके हैं. Now we are talking about an Afghan adventurer, and the name of this Afghan adventurer was Ahmad Shah Abdali. Okay, so we are going to discuss about Ahmad Shah Abdali, the Afghan adventurer. Ahmad Shah Abdali. Okay, so he first invaded India in which year? So the answer is 1748. सबसे पहले कब invade किया? 1748. And after this, he did what? Multiple invasions in India. After this, he did what? Multiple invasions in India. ठीक है. The main purpose or objective behind the invasions of Ahmad Shah Abdali was plundering wealth. This was his main purpose or objective. Plundering wealth was his main purpose or objective. यही है उसका main purpose, objective. Plundering wealth. Okay. So he invaded India, plundered wealth, and returned back. Invaded India, plundered wealth, and returned back. And these invaders were generally entering India from which part? So you all know northwest part. Northwest part. So obviously, in this process of plundering, he established some control over some political territories, and these were the territories in the north, Punjab region. ठीक है. तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि इन पंजाब रीजन he controlled some territories. He established political control, military conquer किया, and he established, read this, some territories of Punjab region, where some territories in Punjab region were controlled by Ahmad Shah Abdali. Some territories in Punjab region were controlled by Ahmad Shah Abdali. But the purpose of Ahmad Shah Abdali was not to rule India. So he returned back and he appointed one of his representative to look after the control of these territories. तो वो तो वापस चला गया, but उसने यहाँ पर अपने एक representative को appoint कर दिया. He appointed one of his representative to look after these territories, and Ahmad Shah Abdali returned back. Okay, now what will happen? Now look at these Marathas. Now Marathas were one of the most powerful forces. Marathas were covering larger areas and territories, and these Marathas were continuously raiding. They were continuously raiding states in south, also in north. They were continuously raiding states in south, also in north. They are having influence in the Mughal court also. Okay. Now, since they are frequently raiding many local territories or the areas, so the local chiefs or the rulers in these areas were not happy with the Marathas, because Marathas will invade and they will say that you will have to pay the taxes, part of the taxes, हमें पैसा दो. Okay, they will collect, and they have their reasons for that why we are collecting this money. Now what will happening? These local states or the local regions were unhappy or dissatisfied with Marathas. देखो, जब आपके पास पावर आए, ठीक है, और पावर आने के साथ साथ अगर आपने लोगों को जोड़ के रखना नहीं सीखा, तो आप क्या हो जाओगे? अनपॉपुलर. और जब आपके हाथ में पावर हो और इन्फ्लुएंस हो, इसके बाद भी अगर आपने हर आदमी को रेस्पेक्ट दिया, तो फिर क्या होगा? यू विल बिकम पॉपुलर. जैसे बॉलीवुड में एक हीरो है, बहुत ही पॉपुलर है, शाहरुख खान. बताओ किस जमाने से हम उसकी फिल्में देख रहे हैं, लेकिन अभी भी मीडिया में उसके बारे में कोई कुछ गलत लिखता है क्या? कोई गलत नहीं लिखता ना, बिकॉज ही नोज हाउ टू ओके बी हम्बल व्हेन यू आर पॉपुलर. तो पॉपुलैरिटी के साथ भी हम्बलनेस को कैसे बनाए रखना है, ये उसे बात बेहतर पता है. यहाँ पे मराठास के साथ प्रॉब्लम क्या है? दे आर वेरी पावरफुल, बट दे फेल्ड व्हाट? दे आर नॉट हैविंग डिप्लोमेटिक आउटलुक.
They are not gaining help and support of local rulers, and this is the method by which they could easily fill the political vacuum. अगर वो लोकल रूलर्स के कॉन्फिडेंस को गेन कर लेते तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या मजाल थी कि इंडिया में रूल कर लेती। मराठास को रिप्लेस करने की ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं थी। दे वेर वेरी पावरफुल और मेनी ऑफ द मराठा चीफ्स वेर वेरी कैपेबल पीपल। ओके, दे वेर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, बट हियर दे मेड मिस्टेक्स। ठीक है, लोकल पावर्स आर अनहैप्पी and there was already in India there was a common problem, and what was the common problem? Lack of political unity। ये तो प्रॉब्लम तो था ही था, lack of political unity between regional powers, ये तो already था, this problem was already there। but here if you will not have this outlook to gain support and confidence, what will happen? हैदर अली ने क्या किया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में? कोशिश की थी कि we can make anti British alliance। that's why we say that he was having a diplomatic outlook। now what will happen? now these Marathas will also raid this area। यहाँ भी पहुंच जाएंगे जहां पे कौन है? अहमद शाह अब्दाली का रिप्रेजेंटेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन? रिप्रेजेंटेटिव किसको फोन लगाएगा? अहमद शाह अब्दाली को, कि भाई इधर भाई लोग आए हैं, बड़ा परेशान किया मुझे। नाउ अहमद शाह अब्दाली कहाँ से? अफगानिस्तान से ही तो आया था, कहेगा फिर मैं आ जा रहा हूँ, वो दूर नहीं आया हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन? Ahmad Shah Abdali will come back। Now they will create troubles for his representative। Now Ahmad Shah Abdali will come back। अब वो come back करता है, and when he will come back, okay, he will make a commitment that I will uproot Maratha power। इस commitment के साथ वो आएगा, is making a commitment that he will uproot Maratha power from India, right? Now he comes back and he take Ahmad Shah Abdali, देखो क्या कर रहा है? He is taking help and support of local rulers against Marathas। ये है डिप्लोमेसी। एक प्लंडरर, अहमद शाह अब्दाली वॉज अ प्लंडरर, लुटेरा था, एंड ही इज टेकिंग हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लोकल रूलर्स। और उसने लपेटा भी किसको? झांसे में किसको लिया? अवध के रूलर को। अब आप समझ जाओ, अवध का रूलर बहुत पावरफुल था, पहले ही आपको बता चुका हूं। सुजाउद्दौला बंगाल से भी ज्यादा पावरफुल स्टेट था। नाउ ही विल टेक हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ सुजाउद्दौला। एक तो इसकी मदद ले लेगा सुजाउद्दौला, he will take help and support of Suzaud-Dawla, the ruler of Awadh, plus he will also take help and support of the ruler of Rohilkhand region। The name was Nazib-ud-Dawla। ठीक है, नजीब-उद-दौला। तो रोहिलखंड रीजन था एक, ठीक है, तो रोहिलखंड रीजन was ruled by Nazib-ud-Dawla। It was ruled by Nazib-ud-Dawla। So we will also take help and support of Nazib-ud-Dawla। तो अब उसके पास दो लोगों के हेल्प और सपोर्ट हो गए, अवध रूलर एंड नजीब-उद-दौला। नाउ ही विल फाइट वॉर विथ मराठास। अब मराठास के साथ इसकी वॉर होगी, एंड द वॉर वाज फॉट इन द ईयर 1761। मंथ और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द मंथ एंड डेट। 1761 द वॉर वाज फॉट। अच्छा देखो, मराठास ये वॉर लड़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं? मराठास का अपना खुद का इलाका क्या है? दक्कन। और वॉर लड़ने कहाँ चले जाते हैं? नॉर्थ। ठीक है, वहां जाने के बाद क्या होगा? ठीक है, दे विल बी ट्रैप्ड। दे फेल टू गेट द सपोर्ट ऑफ द लोकल पावर्स, they will be trapped। Yet local powers had sympathy for the Marathas। For example, Jats had sympathy, but they did not provide active military support। ठीक है, and here Maratha power was crushed and defeated। Okay, so read this, Marathas were defeated in this battle। Marathas were defeated 1761। Maratha were defeated। Third battle of Panipat, Marathas were defeated। Now I will answer पिपिन्स क्वेश्चन, जो आप पूछ रहे थे कि इस पूरी पिक्चर में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चली गई। अब उसको रिलेट करो। मराठास आर डिफीटेड नाउ। अब देखो ईयर क्या है? 1761। नाउ आई एम राइटिंग सम ईयर्स हियर। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग फ्यू ईयर्स एंड नाउ यू कैन इजीली रिलेट। 1757, एक सेकेंड पहले ये मैं बता दूं, देन 1764। ठीक है, दिस इज व्हाट? बैटल ऑफ पलासी। You all know this here,
1759, ठीक है, 1760 बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ वांडीवास, याद आया कुछ? बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ वांडीवास, इट वाज ऑलरेडी फॉट। बैटल ऑफ प्लासी, थ्रू बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ चुका है? बंगाल। अब एक बात यहाँ रिलेट करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनदर क्लेमेंट ऑफ पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनदर क्लेमेंट ऑफ पावर। वी ऑल नो दैट there was a political vacuum created. We all know that there was a political vacuum created during this declining Mughal phase. Declining Mughal phase, there was a political vacuum which was created. एक political vacuum था, is it clear? In this declining Mughal phase, there was a political vacuum, and what we see that East India Company was trying to fill this political vacuum. EIC कोशिश कर रही थी, and here EIC defeated the most important regional state Bengal. Most important regional state, इनको defeat कर दिया है. EIC had also been successful in eliminating their colonial rivals. Eliminating their colonial rivals. EIC ने अपने colonial rivals को भी eliminate कर दिया. डच को एलिमिनेट किया है, फ्रेंच को एलिमिनेट किया है, पोर्टुगीज वेर ऑलरेडी एलिमिनेटेड. तो देखो, फर्स्ट टास्क हैज बीन डन. EIC हैज ऑलरेडी एलिमिनेटेड इट्स कॉलोनियल राइवल्स. कितना आसान है, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर मिलिट्री विक्ट्री एंड पॉलिटिकल विक्ट्री, एंड द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन हैज बीन टेकन. पहला कदम लिया जा चुका है. दे हैव कंट्रोल्ड व्हाट? बंगाल रीजन. बंगाल पे कब्जा कर चुके हैं. नाउ the people of India were believing that Maratha power, okay, will be able to fill this political vacuum. The people were believing that Maratha power will be able to fill this political vacuum. इस political vacuum को कौन भरेगा? Maratha power. The people were expecting कि मराठों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है. ईस्ट इंडिया कंपनी भी मराठों से पावरफुल नहीं है. तो मुगल पावर जो डिक्लाइन हो रही है, और ग्रेजुअली मराठा एम्पायर क्या हो रहा था? एक्सटेंड हो रहा था. तो लोगों को लग रहा था कि अब अगली बार मुगल पावर के बाद कौन सा रूल आएगा? मराठा रूल. बट दिस बैटल that was fought in the year 1761, that is third battle of Panipat. Third battle of Panipat. Here Marathas were defeated, and they were not only defeated, you can say that Maratha power was crushed. Their most important Maratha commanders were killed here. Most important Maratha commanders were killed. And okay, this defeat is what? This defeat is weakness of Maratha power. This weakness of Maratha power was exposed. Their lack of diplomatic outlook was exposed. Their lack of diplomatic outlook was exposed. देखो, इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या यूज किया था? कॉन्स्पिरेसी. बताइए आपको. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या यूज किया? डिप्लोमेसी. Here Marathas failed to use their diplomatic skills. Now this defeat of Maratha power in third battle of Panipat, okay, देखो क्या है. This defeat will not establish that who will become the next ruler of India, but this defeat will establish this fact that who is not going to be the next ruler of India. मेरी बात समझ गया ना? The defeat of Marathas in third battle of Panipat established this fact or notion that who is not going to be the next ruler in India, who is not going to fill this political vacuum in India. तो कौन नहीं फिल करेगा? मराठास नहीं फिल करेंगे. तो ये बैटल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सो एट दिस पॉइंट दैट द डिफीट ऑफ मराठास इन दिस बैटल, in the third battle of Panipat, very important point. At this most important point, that the defeat of Marathas in third battle of Panipat, the defeat of Marathas in third battle of Panipat established
established, okay, the fact that who is not going to fill the political vacuum, established the fact that who is not going to fill the political vacuum, who is not going to fill the political vacuum created due to declining Mughal authority, who is not going to fill the political vacuum created due to this declining Mughal authority, who is not going to fill the political vacuum created due to this declining Mughal authority. नीचे एरो मार्क दे के राइट वन मोर पॉइंट एंड दैट इज राइट दिस, एक और पॉइंट लिखिए, राइट, ओके, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड who would rule India. The third battle of Panipat did not decide who would rule India, but it did not decide who would rule India, but it decided who would not. But it decided who would not. Who would not. Got it? Write one more point, one more statement. One more statement, right? Okay. The victory of EIC in the Battle of Palasi, the victory of EIC in the Battle of Palasi, the victory of EIC in the Battle of Palasi had sown, the victory of EIC in the Battle of Palasi had sown the seeds of British supremacy. Okay. The victory of EIC in the Battle of Palasi had sown the seeds of British supremacy in India, had sown the seeds of British supremacy in India. ये बात समझ गया? But the third battle of Panipat, but the third battle of Panipat gave ample time to East India Company. But the third battle of Panipat gave ample time to East India Company. East India Company to okay, it gave ample time to East India Company to, okay, to strike or to strike or to mature these roots, to strike or to mature these roots, ठीक है, or to grow these roots, ठीक है, okay, to nurture these roots. मेरी बात समझ गए? To strike these roots, to mature these roots, or to nurture these roots. Seeds sown where? In 1757. Now this battle से क्या हुआ? मराठा वीक हो जाएंगे, और जैसे ही वीक हो जाएंगे तो आपको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी विक्ट्री को कंसोलिडेट करने का. मेरी बात समझ गया? बैटल ऑफ पलासी ने क्या किया? इट्स ओन सीड्स. बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की डिफीट ने क्या किया? दिस गेव सफिशिएंट टाइम, एम्पल टाइम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर दे कुड कंसोलिडेट देयर विक्ट्रीज. अपनी विक्ट्रीज को क्या कर सकते थे? कंसोलिडेट कर सकते थे. इज दिस टॉपिक क्लियर? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. यस विपिन, आस्क योर क्वेश्चन नाउ. वो भी एक रीजनल स्टेट है, रोहिलास, वो भी डिस्कस करना है. स्मॉल स्टेट आई विल डिस्कस लेटर, रोहिलास, जाट, ठीक है, और ये लास्ट में डिस्कस करूंगा. छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट पेशवा. नेक्स्ट पेशवा वाज, राइट, नेक्स्ट पेशवा वाज पेशवा माधवराव. राइट दिस. नेक्स्ट पेशवा वाज पेशवा माधवराव. जब भी आप कोई चीज पढ़ो ना तो शॉर्टकट की तरफ मत भागो, ये मेरा सजेशन है आपको. वी आर वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट. होता है ना, किसी ने 10 पेज के नोट्स दे दिया, आपको लगा वाह ये इतना अच्छा नोट्स है. क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि आपको लगता है कम पेजेस है, मैं जल्दी पढ़ लूंगा. जल्दी पढ़ तो लोगे बट उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मेरी बात समझ गया ना? उसमें एक फ्लो नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, कट पेस्ट होगा. वही शॉर्ट नोट्स तब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है किस चीज़ की? कॉन्सेप्ट्स की.
तो जो बच्चे टॉप करते हैं, आप पाओगे कि अपने इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ये नोट्स बड़ा ही कंसाइज है, बड़ा ही शॉर्ट है, इसको मैंने पढ़ा और इससे सिलेक्शन हो गया। बट उसके पहले वाला फेज क्या था वो बताना भूल जाते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं पहले मैंने 1-2 साल तक खूब तैयारी की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लास्ट में ये नोट्स मेरे पास आया और इससे मेरा सिलेक्शन हो गया। यानी पहले जो आपने किया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, दैट इज लाइक सोइंग द सीड्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना है। ठीक है, शॉर्टकट वाला तरीका बहुत पॉपुलर होता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई टीचर आके कहे कि आई एम गोइंग टू टेक 8 आवर्स क्लास, मैराथन क्लास होने जा रही है और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इस क्लास से, ये शुद्ध झूठ है। इसको कहते हैं कंप्लीट फैलेसी। नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप रिवीजन के लिए करो, बट ये मत सोचो कि उस 8 आवर्स की क्लास से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यस, दैट इज गुड फॉर द रिवीजन, दीज टीचर, उनका कहना भी सही है, बट दैट इज गुड फॉर द रिवीजन पार्ट। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। दैट्स नॉट फॉर द फाउंडेशनल लर्निंग। ठीक है, तो ये बात समझना है। आसान रास्ते की तरफ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हम्म, हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे ज़्यादा बच्चे फैसिनेट होते हैं ना उन बच्चों के एग्जाम्पल से जो 21 या 22 ईयर्स में एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये तो देखते हो कि इस बच्चे ने 21-22 में क्लियर कर लिया, बट उस कोशिश में कितने बच्चे तनाव में चले जाते हैं, डिस्पेयर में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये आपने कभी सोचा है? ठीक है, फाउंडेशन पे अच्छी पकड़ नहीं है, राइटिंग स्किल अच्छी है, प्रीलिम्स हो गया, आप सेलेक्ट हो गए। बट कई बार ऐसा होता है कि 21 ईयर्स में बच्चा इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, देन उसके बाद दो दो बार वो प्रीलिम्स नहीं पास कर पाता। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो बेटर और सेफ साइड क्या है कि हमें इस रेस में नहीं पढ़ना है कि 21 ईयर्स में ही हो जाना है। इट इज़ गुड, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा। देर आर यंग स्टूडेंट्स हियर who want to be IAS in 21 years, I'm not discouraging you, बट जब आप 21 ईयर्स में आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो ये आप नहीं क्लियर करते हो, आपके पेरेंट्स भी क्लियर करते हैं, आपका बड़ा भाई भी क्लियर करता है। हो सकता है आपके घर में कुछ लोग गाइड करने वाले हो, जो ग्रेजुएशन के टाइम से आपको गाइड कर रहे हो, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, सही गाइडेंस मिली, आपके पास फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, जो टीचर जिस सेगमेंट में अच्छा उसके कोर्सेज ले रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे को 21 ईयर्स में आईएएस बनाते हैं। वो सिर्फ बच्चा नहीं होता। ठीक है, मैं कहता हूँ बार बार कि अगर मुझे ये लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में कुछ खास है तो ये मेरा है, तो ये गलत है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, ये इसी सोसाइटी इसी सराउंडिंग से मैंने लिया है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उस ब्लाइंड रेस में नहीं शामिल होना है, तनाव से बिल्कुल बचना है, एग्जाम के प्रेशर को नहीं हावी होने देना है अपने ऊपर। मेरी बात समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, 21 की जगह हम 24 ईयर्स में आईएएस बन जाएंगे। आप ज़्यादा बेटर काम करोगे, आपके पास ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी, नॉलेज होंगी। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो काम के साथ साथ। जॉब छोड़ के बैठ गए घर पे, 1 साल में क्लियर करना है, जॉब करते रहो, साथ में तैयारी करते रहो यार। 3 साल में कर लो, 2 साल में कर लो। पेरेंट्स के ऊपर क्यों प्रेशर डालना? मेरी बात समझ गया ना? फिर ये भी नहीं, ये भी जिद नहीं कि कहीं एक खास सेंटर पे ही जाने पे तैयारी होगी, दिल्ली जाने पे तैयारी हो गई, मुंबई जाने पे तैयारी होगी, नहीं। Online students are giving good results for the last 2 to 3 years, and there are more sincere students in online course. पिछले 2-3 साल का ऑब्जर्वेशन है मेरा कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा ही नहीं। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बट स्टिल आई थॉट दैट आई विल लर्न, सीखूंगा, आई विल ट्राई टू इंटरेक्ट। ठीक है, ठीक पढ़ा ले रहा हूँ ऑनलाइन में। ठीक है, मुझे लगता है मैं ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेता हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि आई विल लर्न न्यू स्किल्स एंड दिस इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। बहुत सारे बर्डन से आप भी तो बच जाते हो ना, मंथली एक्सपेंसेस एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऑल इज़ नॉट द सेम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैच्योर बनना है। ये एग्ज़ाम इसी का खेल है, नहीं तो सीट्स तो बहुत लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा इमोटिव नहीं होना है। रोमांटिसिज्म बताया था कल मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे। ठीक है, रोमांटिसिज्म में हम इंट्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, और अपनी वो फीलिंग्स बिलीव्स इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये यू विल हैव टू यूज़ रीज़न। ठीक है, और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ये बात ध्यान रखो। जब इस एग्ज़ाम को सब कुछ मान लोगे तो वो फिल्म में होता है, 12 फिल्म, फिल्म का जो जो कैरेक्टर है वो आईएएस या आईपीएस जो भी है बन जाता है। बट वैसी स्ट्रगल उसने फेस की है कि नहीं, हु नोस। ठीक है, चैलेंजेस तो सबके जीवन में है थोड़े बहुत,
ठीक है, बट फिल्म में चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा फिक्शन बना के दिखाया जाता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ पेशवा इज पेशवा माधवराव। फोर्थ पेशवा इज पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव, and the time period is 1761 to 1772. This is the time period, पेशवा माधवराव, ठीक है। अच्छा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम में हुआ था? मैं मंथ नहीं लिखवा रहा हूँ, बट आप समझ जाना इसके पहले वाला जो था, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, ठीक है, बिकॉज देर इज नो नीड टू नो द मंथ्स, मंथ्स हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ खास ऐसा नहीं है, राइट, राइट दिस पॉइंट दैट पेशवा माधवराव। नाउ राइट दिस नेक्स्ट पेशवा, ये कौन सा पेशवा था? फोर्थ था ना, मतलब अगर हम 1713 के बाद वाले सीरीज को देखें तो ही इज द फोर्थ पेशवा। नाउ फिफ्थ पेशवा, राइट, पेशवा नारायण राव। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वन इज पेशवा माधव राव एंड द सेकेंड इज पेशवा नारायण राव। द टाइम पीरियड इज 1772 to 73. दिस इज नारायण राव। नेक्स्ट इज पेशवा रघुनाथ राव, पेशवा रघुनाथ राव, पेशवा नारायण राव, देन वी सी पेशवा रघुनाथ राव। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, फैक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। द टाइम पीरियड इज 1773 to 74, एंड देन द नेक्स्ट पेशवा इज आफ्टर दिस रघुनाथ राव, द नेक्स्ट पेशवा इज सवाई माधव राव और माधव राव टू, सवाई माधव राव और माधव राव टू, सवाई माधव राव और माधव राव, he is the next Peshwa from 1774 to 1795. This is the time period. और यहाँ लिख लेना, in 1795 he committed suicide, he committed suicide, ठीक है, in 1795 सवाई माधव राव टू committed suicide, ठीक है, he committed suicide. अब what is the story here that is very interesting? Okay, that once there was a problem or succession dispute to become the Maratha ruler. Now here what we see, succession dispute for the Peshwaship. This will start here. This is a new thing. So read this. Okay. Why this entire episode is important? Because basically in this phase, what we see the succession disputes for Peshwaship. We see the succession disputes for Peshwaship. Okay. And in order to understand these concepts, okay, again I am writing few years that is needed to correlate these things. Okay, तो देखो, total 3 एंग्लो मराठा wars were fought. Write this. इसको हम separately भी discuss करेंगे. We will discuss this separately also. Total 3 एंग्लो मराठा wars were fought. Right. Total 3 एंग्लो मराठा wars were fought. Now, what are these wars? The first is from 1775 to 1782. The second war was fought, ये याद रखना है, एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे? टोटल नंबर was 4. एंग्लो मराठा टोटल नंबर is 3. The second is from 1803 to 1805, and the third is from 1817 to 1818, 1817 to 1818. ये 3 एंग्लो मराठा wars were fought. 3 एंग्लो मराठा wars were fought. Is it clear? Now, अब इस वॉर के ईयर्स को कोरिलेट करो, कोरिलेट दिस वॉर ईयर 1775 to 1782. 1775 देखो, व्हेन दिस वॉर स्टार्ट, क्या ये कुछ इस ईयर से कोरिलेट हो रहा है? रघुनाथ राव, माधव राव, ठीक है, कुछ आसपास का टाइम है, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? अब मैं स्टोरी पे जा रहा हूँ. नाउ आई एम कमिंग टू द स्टोरी एंड द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ दिस पेशवा माधव राव, so from 1761 to 1772, write 1 or 2 points about him. Read this. An able and efficient Peshwa. Peshwa Madhav Rao II was an able and efficient Peshwa.
he was an able and efficient Peshwa. He was an able and efficient Peshwa. ठीक है, able and efficient Peshwa. And at this point, that okay, his minister was Nana Fadnavis. His minister was Nana Fadnavis. Nana Fadnavis was his minister. Okay, Nana Fadnavis was his minister. इनके मिनिस्टर कौन है? नाना फडणवीस. And here Nana Fadnavis is also very able and skilled. Nana Fadnavis is also very much able and skilled. Okay, and there is no any conflict between Peshwa Madhav Rao and Nana Fadnavis. इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब ठीक चल रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे एक आदमी पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम क्या है? नाना फडणवीस. ध्यान रखना, पेशवा क्या बन चुका है? मराठा रूलर, प्राइम मिनिस्टर, दोनों पेशवा है. नाउ ही विल नीड द मिनिस्टर, एंड दैट मिनिस्टर इज नाना फडणवीस. Nana Fadnavis was a Maratha chief. So when Madhav Rao died, what will happen? Okay, the next Peshwa will be Narayan Rao. ठीक है ना, Narayan Rao. And Narayan Rao, अब देखो क्या है, Narayan Rao was the younger brother of Madhav Rao. Narayan Rao was the younger brother of Madhav Rao. Narayan Rao was the younger brother of Madhav Rao. Madhav Rao का younger brother था नारायण राव. ठीक है, अब इसके पहले पेशवा कौन था बताओ? माधव राव के पहले हु वाज द पेशवा? तो द पेशवा वाज माधव राव के पहले कौन है? ओके, अभी जिसके बारे में डिटेल किया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बालाजी बाजीराव. ओके, तो राइट दिस, माधव राव, सॉरी, ही वाज द यंगर ब्रदर ऑफ माधव राव. और यहाँ पे एक और नाम है रघुनाथ राव. रघुनाथ राव के बारे में लिख लो, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, राइट. रघुनाथ राव वाज द यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव. Raghunath Rao was the younger brother of Balaji Bajirao. Younger brother of Balaji Bajirao. Balaji Bajirao. अब स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ. Their story is very interesting. Raghunath Rao was the younger brother of Balaji Bajirao. देखो स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग है. After Balaji Bajirao, who becomes the Peshwa? Peshwa Madhav Rao. But who wanted to become Peshwa? Raghunath Rao. बालाजी बाजीराव का छोटा भाई पेशवा बनना चाहता था, बट वो बन नहीं पाया. क्यों बन नहीं पाया? क्योंकि माधव राव के पास किसका सपोर्ट है? नाना फडणवीस का सपोर्ट है. बन नहीं पाया. फिर माधव राव के एक्सपायर होने के बाद अगला पेशवा कौन बन जाता है? नारायण राव. क्यों नारायण राव बनता है? क्योंकि नारायण राव के पास भी किसका सपोर्ट है? फडणवीस का सपोर्ट है. ठीक है, नारायण राव के पास भी फडणवीस का सपोर्ट है. नाउ व्हाट विल हैपन? ओके, नाउ नारायण राव विल बी रिप्लेस्ड बाय whom? रघुनाथ राव. इट मींस रघुनाथ राव विल मेक अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नारायण राव, कॉन्स्पिरेसी करेगा, एंड ही विल बिकम द नेक्स्ट पेशवा. रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा. अच्छा बताओ, क्या रघुनाथ राव के पास नाना फडणवीस का सपोर्ट है? नहीं. नाना फडणवीस का सपोर्ट किसके पास था? माधव राव के पास, नारायण राव के पास. रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी किया और ये पेशवा बन गया. रघुनाथ राव के पास नाना फडणवीस का सपोर्ट नहीं है. नाउ व्हाट नाना फडणवीस विल डू? नाना फडणवीस along with other Maratha chiefs, that there is a name that is very popular in Maratha history, that is बार भाई. Write this word, एक बॉक्स में लिख लो, बार भाई. बार मीन्स 12. 12 इज अ हिंदी वर्ड, सुना होगा आपने. 12 means what? 12. And Bhai means what? Maratha chief or Sardars. Bhai means what? Maratha chief or Sardars. Maratha chief or Sardars. It means there was a group of 12 prominent Maratha chief or Sardars. That was known as Bar Bhai. ठीक है? So Bar Bhai is what? Bar Bhai is a group of 12 prominent Maratha chiefs or Sardars. Clear? Bar Bhai is a group of 12 prominent Maratha chief or Sardars. टोटल 12 prominent Maratha chiefs और सरदार्स का ग्रुप है. और इस ग्रुप को हेड कौन कर रहा है? नाना फडणवीस. नाना फडणवीस इज हेडिंग दिस ग्रुप. नाना फडणवीस इज हेडिंग दिस ग्रुप. और ये लोग मराठा एम्पायर को एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं. ठीक है, और अब आ जाइए पिछले स्लाइड पे.
माधवराव के पास किसका सपोर्ट था? बार भाई का सपोर्ट, राइट। पेशवा नारायण राव के पास किसका सपोर्ट था? बार भाई का सपोर्ट। 12। नाउ रघुनाथ राव को कोई पेशवा बनाना नहीं चाहता था, बट उसने भी अपनी कॉन्स्पिरेसी की और वो खुद पेशवा बन गया। बट व्हाट बार भाई विल डू? बार भाई, विल दे रिमेन साइलेंट? नो, दे विल डू व्हाट? दे विल रिप्लेस रघुनाथ राव विथ माधव राव। ठीक है, तो रघुनाथ राव को यहाँ बार भाई ने क्या किया? अगेन राइट दिस, ओके। बार भाई वॉज अगेंस्ट रघुनाथ राव, ओके। So Raghunath Rao was again replaced with Madhav Rao. Raghunath Rao was again replaced with Madhav Rao too. और ये माधव राव टू इसी का बेटा था, नारायण राव का। सो ही वॉज द सन ऑफ नारायण राव, ओके। तो नारायण राव को बार भाई का सपोर्ट था, तो माधव राव टू को भी किसका सपोर्ट हो गया? बार भाई का सपोर्ट। 12 मराठा चीफ्स का सपोर्ट हो गया। फिर से समझो इस पूरी स्टोरी को, फिर से रिपीट कर रहा हूं। Gradually, Peshwa was powerful, but now a new body is emerging powerful. That is a group of 12 Maratha chiefs or Sardars that is known as Barbhai, 12 and who is headed by Nana Fadnvis. Now, with the help of Nana Fadnvis, who is ruling? Peshwa Madhav Rao. Now he will be replaced with Peshwa Narayan Rao. Again, Peshwa Narayan Rao will having the support of Barbhai, Nana Fadnvis. But Raghunath Rao was aspiring to become the ruler. Okay, so he will make conspiracy. He will forcefully hijack the power. But again, Raghunath Rao will be removed by Barbhai. And now they will bring whom? Madhav Rao too. Madhav Rao too. Who is the kingmaker in this entire process? Barbhai is the kingmaker. And this also shows what? Fight for succession. Dispute for succession of Peshwaship. दो चीजें हैं कि किंग मेकर्स आर द बार भाई and fight for succession. So we see in Peshwaship what? Succession disputes have started. Now tell me, this succession dispute will make Maratha power weaker or not? This will make Maratha power weaker. This shows lack of political unity or not? Yes, this shows lack of political unity. This shows court conspiracies or not? Yes, this shows court conspiracies. ठीक है, इन सब में रघुनाथ राव अकेले पड़ गया है बेचारा। कुछ महीनों के लिए पेशवा बना है 73 to 74 और फिर से हटा दिया गया। उसे पता है कि मराठा चीफ्स आर नॉट विथ हिम। देन रघुनाथ राव विल गो टू ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कहावत सुनिए ना, आ बैल मुझे मार। हमने खुद इनविटेशन कार्ड दे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। रघुनाथ राव विल गो टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विल से हेल्प मी इन बिकमिंग पेशवा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, व्हाट आर यू सेइंग इन बिकमिंग पेशवा? वी एक्सेप्ट यू एज द पेशवा। मौका मिल गया उनको, कहा ये क्या कह रहे हो, तुम पेशवा नहीं हो? हमारे लिए तो पेशवा तुम ही हो भाई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आए क्यों नहीं अभी तक? दिस इज द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी to intervene in Maratha political affairs. Now Raghunath Rao will go to East India Company and he will sign a treaty with East India Company and East India Company will say that दुनिया माने या ना माने हम तुमको मानते हैं पेशवा। अब क्या कहेंगे दूसरे मराठा चीफ और सरदार? अच्छा, तुम कौन होते हो उसको पेशवा मानने वाले? अगर पेशवा मानते हो तो अब होगी लड़ाई। एंड व्हाट विल हैपन? First Anglo-Maratha war will start. So this story we will discuss separately, okay? But here you can write one point here, read this, okay? Raghunath Rao went to East India Company. Raghunath Rao went to East India Company. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने डुप्ले से सीखा था, helping one against the another. So read this, Raghunath Rao went to East India Company to get help and support of East India Company. Raghunath Rao went to East India Company to get help and support of East India Company. Right, next point. In this way, EIC got the opportunity to intervene in this way, EIC got the opportunity to intervene into the in this way, EIC got the opportunity to intervene into the internal political affairs of the Marathas. In this way, EIC got the opportunity to intervene in the internal political affairs of Marathas, which became the root cause for the outbreak of First Anglo-Maratha War, which became the root cause for the
outbreak of first Anglo-Maratha War, which became the root cause for the outbreak of first Anglo-Maratha War, which became the root cause for the outbreak of first Anglo-Maratha War. तो एंग्लो मराठा वॉर तो बाद में देखेंगे, यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? चलो ठीक है, रघुनाथ राव को हटा दिया गया, कौन पेशवा बन गया? माधव राव। बट एक्चुअली हु इज रूलिंग? पार भाई। पार भाई के आतंक से इतना परेशान हो गया माधव राव टू दैट ही कमिटेड सुसाइड इन 1775। इसका मतलब जो हाल कभी मराठा रूलर का था वही क्या हो गया? पेशवा का हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटर हो अगर आप, और ग्रुप पॉलिटिक्स हो रही है, ग्रुप कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इसका मतलब खतरे में कौन आने वाला है? आप आने वाले हो। तो यू मस्ट बी एबल टू चेक व्हाट group politics and conspiracies. This should not be promoted at any cost. This become the reason for the disintegration of any empire, disintegration of anything. ये कभी नहीं होना चाहिए। ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप कॉन्स्पिरेसी, दिस इज द रीजन फॉर द डिग्रेडेशन। तो हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एक ये भी बात सीख लो, ठीक है। तो राइट दिस पॉइंट, ओके। माधव राव, राइट दिस, माधव राव was worried due to excessive interference of Barbhai. Madhav Rao was worried due to excessive interference of Barbhai in Maratha political affairs. In Maratha political affairs, right? And read this according to, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें लिखनी भी नहीं चाहिए, okay? I hope you got this knowledge that 1795 what he did, he committed suicide. Now this is the history of the Peshwas. Now do you understand this thing, that why we say Shivaji as the first founder and Balaji Vishwanath as the second founder? What is the achievement under the age of Peshwas? Okay? In next class I will discuss with you Anglo-Maratha wars, and then I will discuss with you what are the reasons for the decline of Maratha power. So the reason for the decline of Maratha power is GS mains question. I will also discuss with you Maratha system of administration, because this all topic I discuss generally in modern Indian history. तो थोड़ा टाइम इसमें लगता है, और देखो ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से है। अदरवाइज जनरली द टीचर टेक 1 or 2 क्लासेस टू डिस्कस दिस टॉपिक। इंडिया इन 18th सेंचुरी हमने कितनी क्लासेस करी है, और आगे की मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री बहुत ईजी है अगर ये बात आप समझोगे तो। ये वाला हिस्सा बोरिंग है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, जब आपका बेसिक या फाउंडेशन पे पकड़ अच्छा होगा। इससे एक और मैसेज निकल रहा है दैट पहले चैप्टर में कितना टाइम हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हो, बेसिक्स हो, और इस पे जो सुपर स्ट्रक्चर बनेगा फिर वो क्या